Dear friends, welcome to online classes, pharmacy lecture notes. Today we are going to discuss about human anatomy and physiology, D Pharma first year, chapter the blood. Here also we are using Odia language so that it is easy to understand. First, syllabus. So composition of blood, function of blood elements, blood group and coagulation of blood, briefly information regarding disorder of blood. So let's see what are the different question comes from the blood chapter. First, describe about the function and composition of blood, 7 plus 8 mark in 2007. What is blood? Discuss the composition of blood in details with diagram, 3 plus 12 in 2008. In 2009, blood coagulation. In 2010, RH factor. In 2011, composition and function of blood. In 2013, blood grouping, RH factor. In 2014, the coagulation of blood or function of blood. In 2019, in the last exam, write down the function of blood, discuss detail about the mechanism of blood coagulation and clotting factor involved in the process. So, mainly the mechanism of blood coagulation or composition of blood and function of blood. 2-3 questions are common, every year comes. So let us discuss one by one according to the syllabus, like composition, function and blood coagulation. So first, introduction. In this video we are going to discuss mainly introduction or function or the component or composition of blood. So first, blood is a specialized fluid connective tissue. It is a fluid connective tissue. So tissue means when different cells are combined together. So here also different blood cells are combined together, like WBC, RBC, platelet. So it is a liquid tissue suspended in the watery plasma. That means different type of cells are suspended in this plasma. So what is the meaning of fluid? When substance are mixed with liquid or particles are combined with liquid. So here different cells are combined with plasma. So it is called fluid. And different tissue like WBC, RBC or platelet, these are the cells combined together to form tissue. So these are connective tissue. So blood is a specialized fluid connective tissue. कौन बुझिले? Suppose question comes, what is blood? What is blood or define blood? केमती हमें definition लिखियो ना, it is a fluid connective tissue. इन सिंगल लाइन बट बुझेबा पई पड़िबो जे फ्लूइड टा काहाकू कहते ना, जते बेले गोटे पार्टिकल्स गुड़ाक सस्पेंडेड इन ए लिक्विड ताकू आमे कहि परिबा फ्लूइड. तो एठी कौन पार्टिकल बा किए लिक्विड? प्लाज्मा. प्लाज्मा रे डिफरेंट सेल्स गुड़ाक सस्पेंडेड होगी भासमान अवस्था रे अछंती. सो different particles are present in the
plasma or different cells are present in the plasma. Cow cell, the RBC, WBC, platelet. Why it is called connective tissue? तो आमे टिश्यू चैप्टर पढ़ी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड. So different cells are combined together to form tissue. RBC, WBC, platelet एगुड़ा हूँ सेल गुड़ा मिसिकी कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करते हैं. सो ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. So now comes to the what are the different characteristics and volume of blood. So blood is sticky, opaque, it is not transparent, opaque fluid with a characteristics of metallic taste. Iron ଅଛି ତେଣୁ metallic taste. Color depending on the amount of oxygen is carrying the blood vary from scarlet to dull red. That means when blood carry the oxygenated blood, the color is scarlet red. Or when the blood is carry deoxygenated blood, the color is dull red. Color टा change हुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रो प्रेजेंस रे. जत्ते बड़े आर्टेरी रे ब्लड टा फ्लो करूथबो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तार कलर हबो स्कारलेट रेड. आ जत्ते बड़े भेन रे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करूथबो तार कलर हबो डल रेड. So depending upon the presence of oxygen and carbon dioxide. तब देखिबा weight. It is slightly heavier than the water and 5 times thicker, more viscous or legally because it formed element. चले weight is slightly heavier than the water. A pH slightly alkaline, that is pH is between 7.35 to 7.45. Temperature slightly higher than the body temperature, like 38 degrees Celsius and or 104 degree Fahrenheit. So slightly higher than the normal body temperature. Now comes to the volume. It is 5 to 6 liter or approximately 8% of the total body weight. That means suppose my weight is 70 kg. That means what is the amount of blood present in my body? Approximately 70 into 8%, 5.6 liter. Suppose one person weight is 50 kg. The blood approximately 50 or 8%, 4 liter. This is the approximate value. So this is all about your physical characteristics of blood, like color, weight, pH, temperature, total volume. Color scarlet red when oxygen rich or oxygenated blood. Deoxygenated blood dull red. Temperature slightly higher than the body temperature. Volume 5 to 6 liter or 8% of the total body weight. pH slightly alkaline. Then comes to the function of the blood. Main TRP. Easy to memorize. What is the function of the blood? TRP. So T for transportation, R for regulation, P for protection. Three major functions of the blood. Like transportation, blood transport the following substance like gases, oxygen and carbon dioxide between the lungs and rest of the body. One transportation between lungs and other parts of the body, that is oxygen and carbon dioxide.
nutrient from the digestive tract or storage site to the rest of the body. Means nutrient is transport when essential elements are absorbed in the stomach and small intestine. It is transported to various parts of the body. So similarly, waste products are detoxified or removed from the liver and kidney. Similarly, hormones from the glands in which they are produced to their target organ. That means in case of endocrine glands are secretes hormone which is secreted through the blood or reaches through the blood to their respective target organ. So heat to the skin to help regulate the body temperature. So these are the different function involved through transport system. So now comes to the protection. So blood has several role in inflammation. So WBC destroy the invading microorganism or kill the microorganism or cancer cell, and antibody and other protein destroy the pathogen system, and platelet also involved for blood coagulation and minimize the blood loss. So how protect? The WBC destroy the microorganism, antibody destroy the pathogenic substance, platelet prevent from coagulation. Now comes to the regulation. Blood helps to regulate or maintain the blood pH and water balance by transferring water to the various parts of the body or tissue. So these are the three functions involved in blood: transportation, protection and regulation. ताल कौन कहला फंक्शन ना गोटे जगारू आ गोटे जगह को ब्लड टाकू बा डिफरेंट एलिमेंट्स को पहुंचे दउछि। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आकार रे काम करछि ब्लड टा केमिति ना गैस टाकू लंग्स रु डिफरेंट अल्वियोली रु डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचे दउछि फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पाई निश्वास प्रश्वास पाई ऑक्सीजन टाकू डिफरेंट सेल टिश्यू को पहुंचे दिए किए ना ब्लड। तेणु वन ट्रांसपोर्टेशन दैट इज गैसेस आर एक्सचेंज और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज और रिचेज थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड। वन फंक्शन आउ गोटे कौन ना खाद्यटा को पहुंचे दिए कौटू ना स्टमक और मेनली इंटेस्टाइन रे एब्जॉर्ब हैला परे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को खाद्यटा कहा साहाय्य जीवो ना ब्लड साहाय्य पहुंची थाए सेल टिश्यू गुड़ा को एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। सो न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड और वेस्ट मटेरियल गुड़ा जो ब्लड रु बाहरी जाउची थ्रू लिवर और किडनी। सो वेस्ट मटेरियल गुड़ा को रिमूव करवा बॉडी रु दरकार। सो केमती बाहरी थ्रू ब्लड। हार्मोन गुड़ा को मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड रो जो हार्मोन गुड़ा को नो डाउट। सो इट इज रिचेस्ट पहुंची थाए तार टारगेट ऑर्गन को थ्रू ब्लड और मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटिव ब्लड टा टोटल ब्लड माने बॉडी रे ट्रांसपोर्ट है कि मेंटेन है कि रखी थाए कहा को टेम्परेचर को। सो दीज आर द ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ और फंक्शन ऑफ ब्लड और ब्लड ट्रांसपोर्ट थ्रू द ह्यूमन बॉडी। नाउ कम्स टू प्रोटेक्शन केमती प्रोटेक्ट करे ना इन्फ्लामेशन रु लाइक WBC टा
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करिवारे सहायता करे। एंटीबॉडीटा पैथोजेन सब्सटेंस गुडा को डिस्ट्रॉय करिवारे सहायता करे। प्लेटलेटटा प्रिवेंट ब्लड लॉस को प्रिवेंट करिवारे सहायता करथाय। रेगुलेशन बॉडी रो पीएच मेंटेन करके रखे, बॉडी रो वाटर बैलेंस टा को रेगुलेट करके रखे। सो एटा होची रेगुलेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फंक्शन ऑफ ब्लड। नाउ composition or component of blood. So first, whole blood, it is made up of plasma and formed element. And plasma, amino acid, nitrogenous waste, nutrient, protein, gases, electrolytes, and formed element WBC, RBC and platelet. Again, WBC, a granulocyte, 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 neutrophil, basophil, eosinophil, a granulocyte, leukocyte and monocyte. We'll go through detail RBC, WBC, platelet, plasma. We'll go through detail one by one. So again, ताले classification काहाकू काहाकू प्लाज्मा और formed element को लेकी whole blood है। प्लाज्मा और formed element, प्लाज्मा रे कौन कौन अच्छी ना एमिनो एसिड, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट, नाइट्रोजनस वेस्ट, एटा सब प्लाज्मा रे रहिले। और सेल पार्ट रे कौन WBC, RBC एंड प्लेटलेट। अगेन WBC टा ग्रानुलोसाइट, ए ग्रानुलोसाइट, दैट इज न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। नाउ प्लाज्मा, जो प्लाज्मा देखले कौन प्लाज्मा ना प्लाज्मा इज approximately 90% of water. It is the liquid part of blood or fresh frozen plasma. What are the different substances are dissolved in this? Na? Nutrients, salt, electrolyte, respiratory gases, hormone, plasma protein and various waste product of cell metabolism. So what are the plasma protein? Plasma protein are the most abundant solute in plasma, except for antibody or protein based hormone. Plasma protein are made up by liver. Composition एवढा body continuously cell remove dead substance of the blood, assuming health diet. However, the composition of plasma is relatively constant by various hemostatic mechanism of the body. See the figure, what is the color? एटा होची प्लाज्मा जे कि 90% सिमिलर टू द वाटर आउ 10% अदर सब्सटेंस लाइक रेस्पिरेटरी गैसेस अच्छी, हार्मोन अच्छी, प्लाज्मा प्रोटीन, वेरियस वेस्ट प्रोडक्ट एंड सेल मेटाबॉलिज्म एगुड़ा सब डिजॉल्व सब्सटेंस ता सहित मिसिकी थाए। नाउ देखिबा एरिथ्रोसाइट RBC. RBC function primarily carry oxygen into the all parts of the body. See the figure. ये जो RBC गुड़ा को कौन करे ना कैरी करे ऑक्सीजन फ्रॉम अल्वियोली टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो फंक्शन ऑफ ब्लड पड़ते ट्रांसपोर्टेशन कैरी ऑक्सीजन। सो इट इज एन्यूक्लिएटेड मीन्स देयर इज नो न्यूक्लियस। RBC differ from the blood cell because they are anucleated. That means that the lack of nucleus or that they also contain a few organelles. जो सेल organelles गुड़ाक जमी माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी बहुत अल्प थाए बा there is no cell organelles, few cell organelles. So number of RBC, the average normal RBC count for men 5.4 million per cubic liter. See the cubic liter blood, not the whole blood. 5.4 million per cubic liter blood men रो एवरेज नॉर्मल RBC काउंट केते RBC गोटे मेन रो बॉडी रे बा क्यूबिक लीटर ब्लड रे अच्छी दैट इज 5.4 मिलियन और मेन रो 4.8 मिलियन पर क्यूबिक लीटर।
दिस इज द नॉर्मल आरबीसी काउंट केते परिमाण रे आरबीसी गोटे मेन रो बा ओमेन रो क्यूबिक लीटर ब्लड कीप इन योर माइंड cubic liter blood not whole blood per cubic liter blood 5.4 million for men 4.8 million per cubic liter for women and normal blood clinically normal blood contain 12 to 8 gram of hemoglobin per 100 ml माने 100 ml पाखापाखि 91 ग्राम रो जदि हमें ब्लड नबा से भितरे 12 रु 18 ग्राम हिमोग्लोबिन थिबो केते 12 रु 18 ग्राम जदि 1 लीटर रो ब्लड नबा ताले 120 रु 180 ग्राम रो जदि सपोज गुडे 50 केजी रो पर्सन 4 लीटर रो ब्लड एप्रोक्सीमेट अछि ता माने तारो 4 लीटर ब्लड रे केते हो 1000 मिलीलीटर रे केते 1 लीटर तले 1 लीटर रे 120 ग्राम रु 180 ग्राम 4 लीटर रे एप्रोक्सीमेटली 500 ml तले 500 ग्राम रो बा 500 टू 700 ग्राम रो ब्लड सॉरी हिमोग्लोबिन प्रेजेंट अच्छी गोटे ब्लड रे बुझिला माने 100 ml रे 12 रु 18 ग्राम सिमिलरली फीमेल केस रे द hemoglobin content slightly higher 13 to 18 gram per dl then in women men रे 13 रु 18 ग्राम आउ ओमेन रे 12 रु 16 ग्राम पर डीएल एवरेज होची 12 रु 18 ग्राम तले नंबर ऑफ आरबीसी केते 5.4 मिलियन पर क्यूबिक लीटर आउ नॉर्मल ब्लड बा हिमोग्लोबिन केते ना 13 to 18 ग्राम पर डीएल इन मेन 12 to 16 ग्राम पर डीएल इन women. Then microscopic appearance. Erythrocytes are small, flexible, then shaped like biconcave dish, flat dish with disappear center on the both side. को भलिया ना बायोकॉनकेव आम कॉनकेव आउ कन्वेक्स लेंस कथा जानी छु कॉनकेव रे कौन हुए भितरटा पतला आउ साइड गुडा मोटा कन्वेक्स रे भितरटा मोटा साइड गुडा पतला सी द फिगर रे भी से भलिया दिया है भितरटा ए खालुआ भलिया so it is a bioconcave disc flattened disc with disappear center on both sides and average lifespan is 120 days. Average lifespan is 120 days. Now physiology of RBC. So hemoglobin is a molecule which are present into the RBC. So in hemoglobin, protein part is known as globin and non-protein part is known as hem. That means hem and globin, the combination of hemoglobin. Hem part is a non-protein part and globin part is a protein part. That means iron, or hem part is a iron part. So globin molecule transport are responsible for the transportation of carbon dioxide and nitric oxide, and hem carry or transport the oxygen. So both the oxygen and carbon dioxide are transported through RBC. So each RBC has a 280 million of hemoglobin molecule. It carry the hemoglobin molecule like approximately 280 million of molecule contains in each RBC. And how the RBC formed or formation of RBC or erythrocytes or the process is called erythropoiesis.
जो आरबीसी जो तैयारी होची से प्रोसेस टा कहउची एरिथ्रोपोएसिस. सो इन एडल्ट एरिथ्रोपोएसिस ऑकर मेनली इन द मेरो ऑफ स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल प्रोसेस एंड स्कल. तले कोठी तैयारी होची आरबीसी टा को स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल प्रोसेस एंड स्कल. सो एरिथ्रोपोएसिस केते बेले स्टार्ट होची ना व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इज लो. That is called hypoxia. It detected by the cell of kidney. जत्ते बेले बॉडी रो ऑक्सीजन लेवल टा कमी जाउची एटा को डिटेक्ट किए करची किडनी. देन किडनी रिलीज द हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन and erythropoietin stimulate the process erythropoiesis. See the figure. Hemopoietic stem cell or hemocytoblast through converted proerythroblast, then erythroblast, then reticulocyte, then erythrocyte. एरिथ्रोब्लास्ट रो पुणी तीनटा स्टेज रोचे. देखिबा जे when the loss of RBC or the loss of cells are replaced or more or less continuously by the division of hemocytoblast in the red blood or red bone marrow. First, immature RBC, developing RBC different steps or different times. So then begin synthesizing huge amount of hemoglobin. Then reticulocyte suddenly when enough hemoglobin has been accumulated, the nucleus and most organelles are ejected. जो हिमोग्लोबिन बहुत गुड़ा एकाठी हे से ही जो न्यूक्लियस ये ए न्यूक्लिएटेड तेणु न्यूक्लियस गुड़ाक इजाकुलेटेड हो बाहर को बाहरी आसो. सो द रेजल्ट यंग आरबीसी माने आरबीसी टाक और रेटिकुलोसाइट टाक मैच्योर्ड हो और आरबीसी सेल टाक यंग आरबीसी हो कॉल्ड रेटिकुलोसाइट बिकॉज इट स्टिल कंटेन सम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो ता भितर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रही है. सो मैच्योर एरिथ्रोसाइट कौन विदिन 2 days ऑफ रिलीज द इजेक्टेड रिमेनिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम fully functioning erythrocyte. So entire development process from hemocytoblast to mature RBC हेबा पई 3 ରୁ 5 दिन लागुची. So erythropoietin is responsible when the hypoxia condition. It stimulates the stem cell and now control of RBC production. So an important point, remember that the relative RBC in the blood control the RBC production and based on their ability of oxygen transport or oxygen demand in our body. तो ओवरऑल प्रोसेस कौन कहला जेते बेले आम बॉडी रे ऑक्सीजन लेवल टाकू कमी जीवो कंडीशन टाकू कौन कह जीवो हाइपोक्सिया. ए हाइपोक्सिया कंडीशन हेले किडनी रिलीज करिवो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन. एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इट स्टिमुलेट बोन मेरो और हेमोसाइटोब्लास्ट को कन्वर्ट करिवो एरिथ्रोसाइट रे. टोटल प्रोसेस टाकू कहउची erythropoiesis. See the ejaculation of nucleus or reticulocyte रे जो रिलीज होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गुड़ा सब पढ़ी कौन ना इमेच्योर आरबीसी टा मैच्योर रेटिकुलोसाइट रे केमती होची जतले केते बेले न्यूक्लियस गुड़ा को बाहरी की आछी जतले हेमोग्लोबिन आर कंबाइंड टुगेदर और एक्युमुलेटेड होंती. एनाफ हिमोग्लोबिन व्हेन एक्युमुलेटेड जतले अधिक हिमोग्लोबिन एकाठी एक्युमुलेटेड होंती न्यूक्लियस टा बाहर को बाहरी जाए किंतु स्टिल ता भितर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा थाए तेणु ताकू मैच्योर हेबा पई 2 ରୁ 3 दिन लागि थाए. सो विदिन 2 days भितर से एरिथ्रोसाइट गुड़ा को बाहरी जाए एवं आरबीसी टा 3 ରୁ 5 दिन लागे मैच्योर्ड हेबा पई. सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस. Now WBC. WBC help to defend against the disease and lifespan is 13 to 20 days. After which
they are destroyed by the lymphatic system. So they are formed from hemocytoblast. 5 type of WBC in circulating blood, like neutrophil, eosinophil, basophil, monocyte and lymphocyte. So these are 5 type of WBC are circulating in the blood and are distinguished by the size, granular appearance of the cytoplasm, shape of the nucleus और स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक. ताले को अनुसार आमे ताकू न्यूट्रोफिल, बायोसिनोफिल, बेसोफिल आमे जानूचु ना तार appearance of the cytoplasm, shape of the nucleus और staining color अनुसार. See the figure. Shape. Neutrophil are different, eosinophil, monocyte, basophil and lymphocyte. So neutrophil have red staining, eosinophil have coarse granular and deep red stain, basophil blue staining, monocyte larger blood cell, lymphocyte long lived and large round nucleus, and percentage 50 to 70% neutrophil, eosinophil 2 to 4%, basophil 1%, monocyte 2 to 8%, lymphocyte 20 to 30% of the total WBC. Diameter 10 to 12 micrometer. Eosinophil 10 to 12 micrometer. Basophil 12 to 15 micrometer. Monocyte 15 to 30 micrometer. Lymphocyte 12 to 15 micrometer. And lastly, lifespan. Neutrophil 6 hours. Eosinophil 8 to 12 days. Basophil few days, few hours to few days. Monocyte few hours to few days. Lymphocyte the lifespan, whole life. So this is the WBC. कौन कहला ना लाइफ स्पान ऑफ WBC 13 रु 20 दिन. ग्रानुलार आउ ए ग्रानुलार दि भाग रे विभक्त करा गला. ग्रानुलार रे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ए ग्रानुलार रे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट. तार स्टेनिंग अनुसार ताकू आमे रिकॉग्नाइज करि परिबा. रेड स्टेनिंग हितले न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल रो भी डीप रेड स्टेनिंग, बेसोफिल रो ब्लू स्टेनिंग, मोनोसाइट रो लार्जेस्ट ब्लड सेल हितिबो, लिम्फोसाइट रो लॉन्ग लाइव्ड एंड लार्ज राउंड न्यूक्लियस हितिबो. आउ कोन केते परसेंट अछंती 50 रु 70% हला न्यूट्रोफिल, 2 to 4% हला इओसिनोफिल, 1% हला बेसोफिल, मोनोसाइट हला 2 to 8%, लिम्फोसाइट हला 20 to 30%. आउ कोन डायमीटर 10 to 12 micrometer neutrophil, 10 to 12 micrometer eosinophil, 12 to 15 micrometer basophil, 15 to 30 micrometer monocyte and 12 to 15 micrometer lymphocyte. Lifespan 6 to few days hela neutrophil, 8 to 12 days eosinophil, then few hour to few days basophil and monocyte and lifelong lymphocyte. So these are the different cells. See the figure. Function कौन? Leukocyte can squeeze between the cell lining wall of the blood vessel and attack the bacteria and debris. से squeeze सुप्त अवस्था रे थिबो कोठी inner lining wall of the blood vessel. When bacteria and debris comes, it engulf. So neutrophil and monocyte are phagocyte and monocyte are engulfing the larger particle, and eosinophil attack the antibody level material through release of cytotoxic enzyme. Basophil damage the tissue and release the histamine and promotes inflammation or heparin to inhibit blood coagulation. Similarly, lymphocyte are major player of specific immune reaction to produce some antibody. ताले प्रत्येकटार गोटे गोटे अलग अलग फंक्शन रोचे. जमती न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फेगोसाइटिक और मोनोसाइट एनगल्विंग द लार्जर पार्टिकल. इओसिनोफिल अटैक करची एंटीबॉडी लेवल मटेरियल. बेसोफिल डैमेज द टिश्यू और रिलीज हिस्टामाइन. लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी.
then normal count. Normally the 5000 to 10,000 cubic millimeter WBC present in cubic millimeter, or average 9000 millimeter per or cubic millimeter. ताले par cubic millimeter blood रे 9000 रो WBC रोचे. This is a normal count. Now platelet. Platelet formed by the bone marrow from cells called megakaryocytes. It is also have no nucleus like RBC. RBC रे जो भले nucleus नहीं, platelet रे मध्य platelet cell रे nucleus न था, and can secrete variety of substance. Can also contract or contain actin and myosin. Actin and myosin with the microfilament. So normal concentration in the blood is 250,000 per cubic milliliter, and the average lifespan 7 to 10 days, and plays an important role in homeostasis, that is preventing blood loss. ताले कौन कहला प्लेटलेट? देखो गोटे जमती आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट इज ऑल्सो सेल ब्लड रो गोटे पार्ट. ये कौन करे? या देहरे मध्य न्यूक्लियस न थाए. ए सेल गुडा मध्य ए न्यूक्लिएटेड. और नॉर्मल कंसंट्रेशन होची 250,000 पर क्यूबिक एमएम ब्लड रे थाए. तारो लाइफ स्पान होची 7 to 10 डेज. हाउ मेन फंक्शन है प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस, दैट इज हेमोस्टैटिस. So this is all about your composition or component of blood, that is RBC, WBC and platelet. A quick recap of the blood. First, syllabus mainly composition of function. Composition, function of coagulation exam रे आसे. तारो introduction है fluid connective tissue slightly higher than the body temperature. Weight is heavier than the water slightly. Total volume 5 to 6 liter. Then scarlet red oxygenated blood, dull red deoxygenated blood. Then function TRP, transportation regulation of protection, transportation gases, nutrient, waste product, hormone, heat एवढा सब ट्रांसपोर्ट करता है. प्रोटेक्शन माइक्रोऑर्गेनिज्म रु बा एंटीबॉडी पैथोजेन सब्सटेंस रु बा प्लेटलेट ब्लड कोआगुलेशन रु. रेगुलेशन से बड़ा पीएच रेगुलेशन करे, वाटर बैलेंस करता है. क्लासिफिकेशन प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा एमिनो एसिड, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट, नाइट्रोजनस सब्सटेंस मिसिकी थाए प्लाज्मा रे. फॉर्म्ड एलिमेंट डब्ल्यूबीसी और आरबीसी प्लेटलेट. WBC again granulocyte, A granulocyte, granulocyte neutrophil, eosinophil, basophil, A granulocyte, lymphocytes and monocyte. तापर प्लाज्मा कौन डिजॉल्व सब्सटेंस देखिले मिसिकी रही. आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड सेल, न्यूक्लियस ता भितर नाई. नॉर्मल लेवल फॉर मेन 5.4 million per cubic liter, for women 4.8 million per cubic liter. बट नॉर्मल ब्लड रे केते हीमोग्लोबिन थाए ना एवरेज 13 to 18 gram per dl deciliter blood रे in men, and 12 to 16 gram per deciliter blood in women. So microscopical appearance सेटा बायोकॉनकेव शेप और एवरेज लाइफ है 120 days. सेमती एरिथ्रोपोइसिस, द प्रोसेस इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस. जेतेबेले ब्लड रे हाइपोक्सिया कंडीशन होबो, द एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन स्टिमुलेट द बोन मैरो. Then WBC different types, 13 to 20 days lifespan. Then platelet 7 to 10 days lifespan. Then preventing from the blood loss. So we are next planning blood grouping and blood coagulation of blood and disorder of blood. So thank you for watching this video. Stay home, stay safe. Thank you.